Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967342256. Contact us right away for the best OET coaching and for the best sample videos of OET. Subscribe our channel right now. Today we are doing a speaking task. This is the speaking task that we are doing today. So you are visiting a 90-year-old client who has lived fairly independently. So there is a client who is 90-year-old. He has lived fairly independently for many years in a separate unit on a property. The family are going overseas for 2 weeks and your client is going to a retirement home. So basically what is happening, जिस family के पास वो 90-year-old person रह रहा है, so that family is basically the family is going overseas. तो पीछे से जो 90-year-old client रह गया है, that basically is going to a retirement home to avoid being isolated. तो उनका बड़ा सा घर है, large property में रहते हैं, तो 90-year-old person को शिफ्ट करना पड़ रहा है. यू आर कंडक्टिंग एन एज्ड केयर असेसमेंट. तो आप एज्ड केयर असेसमेंट कर रहे हो. कॉम्प्लीमेंट द एल्डरली क्लाइंट ऑन द पॉजिटिव एंड अनसेल्फिश एटीट्यूड. इस पॉइंट को आपको बहुत ध्यान से बोलना है. जब तक वो क्लाइंट खुद नहीं कहता कि आई एम डूइंग इट फॉर माई फैमिली, दैट आई डोंट वॉन्ट टू गो विद देम, आई वॉन्ट टू स्टे हेयर सो दैट दे कैन एंजॉय, आई वॉन्ट टू शिफ्ट टू रिटायरमेंट होम. तो जब वो कहेगा आई वॉन्ट टू शिफ्ट टू रिटायरमेंट होम, तब आपको इस पॉइंट की रेलेवेंस समझ आएगी कि आई रियली अप्रिशिएट योर पॉजिटिव एंड अनसेल्फिश एटीट्यूड. तो ये पॉइंट आपको तब बोलना चाहिए जब वो पूरी फैमिली, बेसिकली आप उस फैमिली को ये कह रहे हो कि उस पर्सन को ये कह रहे हो कि दैट पर्सन इज डूइंग रियली काइंड ऑफ एन अनसेल्फिश थिंग, कि वो अपने आप को रिटायरमेंट होम में शिफ्ट कर रहा है एट दिस एज ऑफ 90. तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि यू आर वेरी पॉजिटिव और वी रियली अप्रिशिएट योर अनसेल्फिश एटीट्यूड. Reassure the client of privacy flexible house rules. अब जब client 90-year-old है, when he will be shifting to a retirement home, तो उसे प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि वो इतने साल से प्राइवेसी में रहा है. एंड फ्लेक्सिबल आवर्स ऑफ फ्लेक्सिबल हाउस रूल्स, कि उसे स्ट्रिक्ट हाउस रूल्स नहीं चाहिए. तो इस पॉइंट को आप कैसे बोलोगे? अगेन आपके पास 3 मिनट्स लिखने के होते हैं, यू हैव 3 मिनट्स टू राइट. तो उस पॉइंट को आप ऐसे लिखोगे, डोंट वरी, वी हैव फ्लेक्सिबल हाउस रूल्स. तो हमारा एनवायरनमेंट स्ट्रिक्ट नहीं है, वी हैव फ्लेक्सिबल हाउस रूल्स एंड अवर एनवायरनमेंट इज नॉट स्ट्रिक्ट. सो ये पॉइंट आपको आने चाहिए. फिर उसके बाद एक्सप्लेन द होम्स फिलोसफी, मेकिंग द क्लाइंट्स फील एट होम. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग वी डू, वी मेक द क्लाइंट्स फील एट होम. Respecting wishes, we respect each and every wish of yours. Unrestricted visiting hours to meet the quality of life desires, कि आपको कहीं पे भी आना है या आपसे कोई मिलने आना चाहता है, to maintain the quality of desires, हम unrestricted visiting hours रखते हैं. Ask him daily routines, कि उसके daily routine क्या है, कब सोते हैं, habits क्या है, meals क्या है. Highlight the fact that you are noting his or her usual daily routines in your clinic plan. तो उसको बताओ कि हम आपके जो भी आप हमें बता रहे हो, हम उसे नोट डाउन कर रहे हैं ताकि एक अच्छा नर्सिंग केयर प्लान बना सकें. जब आप आओ उससे पहले ही हम केयर प्लान बना के रखेंगे, इसलिए हम आपके सारे पॉइंट्स नोट कर रहे हैं कि आपको कब सोना है. सो इन पॉइंट को कैसे लिखना है, इस वाले पॉइंट को, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कितने बजे सोते हो. सो आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर स्लीपिंग आवर्स. सिंपल. Okay, what are your habits, what kind of meals do you like, what kind of food do you like. So ये simple है. क्वेश्चन सिंपल पूछते हैं डू में. what kind of, डू का मतलब हम ये कहना चाहते हैं that it is present indefinite, कि आप क्या खाते हो. हैबिट पूछना चाहते हैं कि आपके हैबिट में आप क्या खाते हो, तो वो हैबिट हमेशा डू में जाती है. what kind of food do you like, what kind of things. तो उसको कहो ये आई हैव नोटेड डाउन, मैंने ये सब कुछ नोट कर लिया, या लिखो मैं नोट कर रही हूँ, आई एम नोटिंग डाउन ऑल दीज थिंग्स to prepare a good nursing plan. ठीक है. देन अगला पॉइंट आता है, आस्क हिम अबाउट द मेडिकेशन रेजीम, कि आपकी कोई मेडिकेशन तो नहीं है. अगर क्लाइंट कहेगा हाँ मैं मेडिकेशन खाता हूं, तो आपको वो बताना है. समराइज योर डिस्कशन एंड रीअश्योर दैट क्लाइंट दैट यू विल पास ऑन दिस इंफॉर्मेशन ऑफ कंटेंटमेंट विद द अरेंजमेंट्स. ओईटी में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है. जैसे मान लो आपको ये पॉइंट में दिक्कत आ रही है, इफ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल विद दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट को आप मत बोलो. नहीं तो ये पॉइंट ये कहना चाहता है कि क्लाइंट को बोलो कि आप आई विल पास ऑन योर कंटेंटमेंट विद द अरेंजमेंट्स टू योर डॉटर, या तो सेम बोलो. सो डोंट वरी, नाउ आई रीअश्योर दैट
I will pass on your contentment का मतलब your satisfaction with the arrangements to your daughter, कि हम आपकी daughter को भी बता देंगे कि आप interested हो इस plan के लिए. So that is how it should be. अब role play मैं आपको बोल के दिखा रहा हूँ, please ध्यान से सुनना. Good morning, my name is Bhupesh. I am a nurse over here and I have come here to ask you about, as I have come to know that you want to shift to retirement home. Am I right? तो वो client बताएगी yes you are right because my family is going outside and I have been living fairly independently for many years in a separate unit, but as they want to go out, so I want them to enjoy. Okay, well, I really appreciate your positive and unselfish attitude that you are shifting for your family, that you are shifting to a retirement home for your family. That is very unselfish attitude, and I really appreciate it. But nurse, I don't want to shift like that. I would like to know about the rules of the house. I would like to know about my privacy because, as you know, I'm living in a separate unit at in this large property. So I don't like any kind of interference. तब आप ऐसे कहोगे, well, don't worry, there would not be any kind of interference. And also we provide flexible house rules. So simple, we provide flexible house rules. I would also like to tell you more about our retirement home, that we like to make clients feel at home. We respect each and every wish of theirs. And also there are unrestricted visiting hours to meet the quality of life desires. So there is nothing that you need to come on time, or if anybody wants to meet you, then it is allowed at any time so that you can meet the quality of life desires. So how does it sound? तो वो कहेगा बड़ा सुन के बड़ा अच्छा लगा. Well, it sounds really good. Well, great. So to provide you the best services, I need to ask you some questions. May I? Yes, please. Okay, you may ask me questions. Okay. So first of all, I would like to know about your sleep habits. At what time do you sleep? Well, nurse, I normally sleep around 9 to 12. I can sleep anytime. There are no strict hours. Then you will say, okay, that's great to know. And again, we have flexibility of hours, so you can sleep according to your choice. So what kind of food do you eat? तो बताएगी कि I eat this and that food. तो आप कहोगे okay. So I am noting all your usual daily routine in your care plan so that we can provide you the best services. There is one more question that I would like to ask you. Do you take any medications? तो वो कहेगी no, I don't take any medications. तो आप कहोगे okay, then that's great that if you are not taking any medications, so that's great. But then client will say, but I'm taking my usual medications like diabetes and blood pressure medications, hypertensive medications. Okay, I will take these medications and also we will provide you these medications on time. तो आप ये बताओ कि we will provide you these medications on time. There is nothing to worry. And then in the last, so would you are you happy to move with us? तो वो कहेगी yes. Then okay, I will pass this contentment to your daughter that you are happy to move. So this is what this role play is all about, कि आप client को खुश करने आए हो कि वो आपके retirement home में shift करे. तो आप nurse हो, home visit के लिए गए हो. तो again मैं आपको छोटे छोटे points दोबारा highlight कर रहा हूँ. Good morning, I am a nurse. I have come to your home because we have got the information that you want to shift to a retirement home. Am I right? फिर client अपने आप बातें करने लग जाता है. Then you ask about simple things, अपने retirement home के बारे में बताओगे, फिर क्वेश्चंस पूछोगे, फिर कहोगे आई एम नोटिंग दिस डेली रूटीन ऑफ यूअर्स सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू द बेस्ट सर्विसेज. डू यू टेक एनी मेडिकेशंस एज वेल? ओके, आई हैव नोटेड डाउन द मेडिकेशंस टू. एंड नाउ आर यू हैप्पी टू गो अहेड विद अस? फिर वो कहेगा यस. ओके, आई रीएश्योर यू. रीएश्योर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई रीएश्योर यू that you will get very good services. Also, you will get good quality of life with flexible hours and we will respect all your wishes. तो ऐसे आप उसको close कर सकते हो. So this is how OET speaking needs to be done. Please listen to this video 2-3 times. एक बारी में वो information नहीं पहुंचती आप तक जो पहुंचनी चाहिए. तो please listen to this video 2-3 times so that you can learn more effectively. And each और कुछ जो नए points होते हैं उनको आपको लिख के देखना चाहिए. When you write them, you feel better. So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967 34256. And also subscribe our channel if you have not. Thank you.